Hi, how are you? Fine, very good. We'll begin with our English class. Yes, last time we did which chapter? Do you remember? Yes, we did lesson number 2, and today we are going to do lesson number 3. And the name of the lesson is Good Habits. And good habits you have already learned in senior KG, you have also learned in junior KG, and you yourself know your mama keeps on telling you this is a bad habit, this is a good habit. Every person tells you, no, good habits and bad habits. So all of you know, is it not? So we are just going to revise quickly whatever you are knowing, and some things which you don't know, that also we will learn. Okay, chalo, let's see. What is this girl doing? You already know this. Good habits. What are the good habits? You should wash your hands. When should you wash your hands? Yes, before having food, after having food, and also after you go to the toilet. Okay, but now during this corona times you should constantly keep on washing your hands. Okay, every 2 hours or so. Okay, and what is this little boy doing? Yes, he's taking a bath, है ना? So you should take a bath every day. Possibly you should take it 2 times a day, in the morning also, and at night before you go to sleep. Then what is this? You should always throw rubbish in the dustbin. Okay, you should not keep on throwing it everywhere. And that is applicable not only at your home but also in your classroom, on the roads. जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, अभी नहीं जा रहे हैं, मगर जब भी आप जाओगे तो रास्ते पे कोई कचरा नहीं फेंकना है. What you can do is you can simply keep your waste in a bag, and when you see a dustbin you can throw all the waste all together in the dustbin, है ना? वो कचरा जो भी है एक थैली में आप जमा करके रख सकते हैं, और साथ में आप उसको कचरे का डब्बा आपको कहीं भी रास्ते में दिखता है तब उसमें फेंक सकते हैं. ओके, सो दीज आर द गुड हैबिट्स. What else? You have to brush your teeth twice a day. That you have been learning. सब लोग ब्रश करते हैं ना? सुबह तो करते हैं, रात को सब लोग करके सोते हैं. Yes. If you are not, that is very wrong. You have to clean your teeth before you go to sleep. What else? You have to play outdoor games. Nowadays, you must have stopped playing outdoor games, right? Because of Corona, you are not able to go out of the house. Still, you can exercise at home. ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए. When you play, it gives you exercise, है ना? आप खेलते हैं तो वही आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज होती है. So outdoor games खेलना ज़रूरी है, and you should exercise now. Since you are not playing outdoor games, you can exercise at home. Okay, you can dance. Okay, that is also a type of exercise. And what? You have to sleep on time. रात को देर तक नहीं जागना है, and also you have to get up early in the morning. Okay, nowadays you don't have to go to school early in the morning. Otherwise, if you don't sleep on time at night, then what will happen? In the morning you will not be able to get up only, and our school starts sharp at 7 o'clock. Okay, so you should sleep on time and get up early in the morning. On time means what? 10 o'clock. Some more good manners for you. You have to be neat and tidy. Neat and tidy means what? We learned in the earlier lesson, no? How people like to play only with clean people. है ना? Even the cat, she likes to play only with a clean person. Okay? So you have to clean yourself, you have to brush your teeth,
take a bath, wear clean clothes, comb your hair. Okay, that is all uh, we need to do to keep ourselves neat and tidy. Okay, खुद को ही neat and tidy नहीं, neat and tidy is also applicable to our house. सब चीजें जगह पे रखनी है. You should not keep on throwing everything here and there. Once you study, you have to keep your books in place. Once you change your dress, then you have to uh, go for keep it for washing. Okay, instead of throwing it here and there, it should go at proper place. Bags है, आप कहीं से आए हैं, बैग है तो उसको भी जगह पे रखना है. शूज है, उठा के जगह पे रखो. So everything you have to keep in place. You have to keep your house neat and tidy. In the same way, you have to keep your classroom also neat and tidy. In the class, what you do? You throw the papers here and there, you tear the papers, and sometimes you throw the rubbish outside. कहीं भी फेंक देते हैं. पेंसिल को शार्पन करते हैं और फिर उसका जो पेंसिल शेविंग्स होता है वो भी कहीं भी डाल देते हैं. So you should not do all that. You should throw all the waste in the dustbin. Okay, at home also and in the class also. What else? Your cupboard. You have to fold all your clothes properly or hang it on the hangers and keep it properly in your cupboard. You have to keep your books in your bookshelf और book के लिए आपकी जो जगह है cupboard है drawer है shelf है जो भी है वहाँ पे बहुत अच्छे से जमा के रखनी है. What else? This already I told you, throw all the rubbish in the dustbin. You should not spit anywhere. ठीक है, spit यानी थूकना. आपको कहीं भी थूकना नहीं है. You should go to the bathroom in the basin. You can spit, but you should not spit on the road or any other place. Okay. So all these are good habits. Brushing is a good habit, but can you see what the girl is doing? Look here. The tap is on. She is not closing it. So what is happening? She is wasting water. Is this a good habit? No, you should not waste water. Okay. So whenever you brush your teeth, good habit is to close the tap and open it only when you require it. What else? You should not waste the food. Dekho. Look here. So much food you are wasting just because you don't like it. मुझे नहीं खाना. जितना आपको चाहिए उतना ही आप प्लेट में लो और उतना खा के खत्म करो. प्लेट शुड बी क्लीन. You should not throw anything in the dustbin. Do you know why? Because there are so many people in the world. पूरी दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता. You can give this food to the needy people. ठीक है, आप जो ये खाना वेस्ट करते हैं, आपको जो नहीं चाहिए वो जिसको ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है उनको आप दे सकते हैं. ओके, उनका पेट भरेगा. आप कचरे के डब्बे में डालेंगे तो वेस्ट हो जाएगा. सो यू शुड नॉट वेस्ट योर फूड. सिमिलरली देर आर मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड. दुनिया में ऐसी कितनी जगहें, कितने लोग हैं जिनको पीने का पानी भी नहीं मिलता है एंड हम लोग वेस्ट करते हैं. इट्स सो बैड. सो you should remember, you should not waste water and you should not waste food. What else? You have to eat healthy food. Healthy food is what? Vegetables, fruits. Okay. What else? Some people eat non-veg, so they can eat eggs, meat, fish. All these are healthy food. You should drink milk. And why should you eat healthy food? Because healthy food will give strength to your body. आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा. इट विल हेल्प योर ब्रेन टू रिमेन एक्टिव. ठीक है, आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, उसको भी आप जो भी पढ़ाई करते हैं आपको जल्दी से याद हो जाएगा हेल्दी फूड खाने से. अगर आप चिप्स खाएंगे तो क्या होगा पता है? उसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है. ओके, एंड दोज आर ऑल नॉट हेल्दी फूड, दे आर जंक फूड. जंक फूड खाने से क्या होता है? यू ओनली ईट सॉल्ट, शुगर,
यही सब आपकी बॉडी में जाता है, उससे आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता ही नहीं है। अब आप आप होशियार नहीं बनेंगे उसकी वजह से। ओके, आपको पढ़ाई जल्दी से याद नहीं रहेगी। सो आई नो दैट ऑल माय स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों को अपनी पढ़ाई फटाफट खत्म करके खेलना होता है कि नहीं? तो अभी फटाफट खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, है ना? सो डोंट ईट दैट जंक फूड, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू रिमेम्बर योर स्टडीज। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ कैन यू सी दिस ट्रायंगल? ये क्या है पता है? ये इट इज कॉल्ड अ फूड पिरामिड। लुक हियर, कैन यू सी एट द बेस? बेस मतलब नीचे के पार्ट में क्या है? ब्रेड है, राइस है, चपातीज है। ऑल दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच वी रिक्वायर एंड इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, है ना? वर्क एंड प्ले, हमारा काम क्या है? काम करते हैं हम, अलग अलग खेलते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा? when we eat bread, rice, chapati, that that time we'll get that energy. Okay, then look, ज़्यादा ये खाते हैं, उसके बाद fruits and vegetable, these gives us vitamins and minerals which are very important. देखिए, if you eat carrots then it will help in improving your eyesight, ठीक है? आंखें आपकी अच्छी करने के लिए हेल्प करेगा। ऐसे ही हर वेजिटेबल में, हर फ्रूट में अलग अलग विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे बॉडी का फंक्शन अच्छे से करने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा, उसके ऊपर देखिए क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मतलब फिश, एग, मीट, मिल्क, चीज, ये सारा प्रोटीन्स, दे गिव अस प्रोटीन्स। और हमारे जो बॉडी है उसमें अगर आपको कहीं लग जाता है तो वो पूरा बनाने में हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। आप छोटे बच्चे हैं, आपको बड़ा होना है, तो आपको प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, विच विल हेल्प यू ग्रो। प्रोटीन्स विल हेल्प यू ग्रो, आपकी हाइट बड़ी होगी, है ना? ये सब विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। सो यू शुड इंक्लूड प्रोटीन्स इन द डाइट, ठीक है? ये सब चीज़ें, दूध, चीज़, देन एग, फिश, मीट, ये सारा आपकी डाइट में होना चाहिए। एंड सपोज यू आर अ वेजिटेरियन, देन यू कैन हैव दिस मिल्क, चीज, व्हाट एल्स, दाल, दाल में भी काफी प्रोटीन होता है। सो यू कैन हैव ऑल दीज थिंग्स। ओके, एंड लास्ट में योर जंक फूड, sometimes, like I always say, once in a week you can have junk food. Okay, पूरा वीक हेल्दी फूड खाना है, once in a week, सैटरडे और संडे you decide which day. One day you keep, you can have junk food, your ice creams, chocolates, cold drinks, all that comes in junk food. So in a week, one day only, हफ्ते में एक ही दिन। Okay, understood? Okay, so good habit is having healthy food. Okay, नेक्स्ट इज हेल्प ईच अदर। ओके, हेल्प करना है। कोई भी आपका फ्रेंड है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, यू हैव टू हेल्प देम टू ओवरकम। अगर आप कर सकते हैं तो हेल्प करना है। वाई? बिकॉज इन टर्न जब आपको जरूरत होगी देन योर फ्रेंड विल ऑल्सो हेल्प यू। ऑलवेज हेल्प ईच अदर। ओके, together if you work then you will be able to complete your work faster and you will all be able to go together, मूव कर सकते हैं आप सब। वो चीज जो आपने कंप्लीट की है वो साथ में एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, यू कैन हेल्प ईच अदर एंड एवरीबडी विल बी सक्सेसफुल। आप सब एक दूसरे को हेल्प करके सब लोग साथ में जीत सकते हैं, सब लोग साथ में एंजॉय कर सकते हैं, है ना? सो ऑलवेज रिमेम्बर, हेल्प ईच अदर। डू नॉट हार्म एनिमल्स, है ना? बटरफ्लाईज होते हैं, उनको हम लोग काफी टाइम पकड़ने जाते हैं, बट दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। ओके, दे गेट हर्ट व्हेन यू होल्ड देम इन योर हैंड्स। अगर आप उनको हाथ में पकड़ते हो तो उनको भी दर्द होता है ना? So you should not harm the animals. Some people throw stones at the birds or even the dogs, cats, other animals. ऐसा हमको करना चाहिए?
No, you should never harm the animals. These are the good habits which you should follow. So now I follow all these things. Okay. What are the things which I follow? Do you know? I don't harm the animals. I am neat, clean, and tidy. I don't spit anywhere. I help everyone. I don't waste water. I always put rubbish in the dustbin. I don't waste food. I eat healthy and fresh food always. And so, this is all. I never harm the animals, also. I told you already. So, all these things I am following. Are you following it? आप भी इसको फॉलो करते हैं? नहीं करते होंगे तो करो, एंड करते होंगे तो वेरी गुड चिल्ड्रन. So these are the good habits which you should remember to follow. Okay. So now let's take a look at this exercise. You can open your English textbook. English textbook आप open कर सकते. Page number 34, 34 open करो. I'm waiting for you. Okay. Opened. Very good. Now there is this exercise. Second one, put a tick mark डालना है for good habits, and whatever are bad habits you have to put a cross. Okay, so tick mark for good habits and cross for bad habits. I will read out the sentences. You are there, you have your pencil and eraser with you, right? Yes, very good. So I will read out the sentence. You tell me whether it is a good habit or bad habit. Priya wastes food. Priya wastes food. So food waste करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? Yes, it is a bad habit. So what should I put there? A tick or a cross? Yes, a cross. You are right. You can put a cross in your textbook also. Next, Rohan closes the tap while brushing. Rohan closes the tap while brushing. ब्रश करते समय रोहन टैप को बंद करता है. गुड हैबिट और बैड हैबिट? Yes, it is a good habit. So tell me whether I should put a tick or a cross? Yes, a tick. Right, you can do that. Next one. Minnie brings chips every day in her tiffin. Minnie brings chips every day in her tiffin. मिनी स्कूल टिफिन में रोज रोज चिप्स लेके आती है. तो चिप्स इज अ हेल्दी फूड और अ जंक फूड? Yes, it is junk food. So every day if you eat junk food, is it all right? Is it okay? No. So it is a good habit or a bad habit? Yes, it is a bad habit. So what should I put? A tick or a cross? Yes, a cross. You are right. Next. Aman kicks his pet dog. Aman kicks his pet dog. Kicks मतलब लात मारना. इज इट राइट? वो अमन है, वो किक करता है अपने पेट डॉग को. ये गुड हैबिट है कि बैड हैबिट? Yes, it is a bad habit. Very bad. You should never do that to any animal. So what should I put? Tick or cross? Yes, you're right. Cross. Sohan takes care of his cat. Sohan takes care of his cat. यानी सोहन अपने कैट का ख्याल रखता है. Good habit or a bad habit? Yes, it is a good habit. So what should I put? A tick or a cross? Yes, a tick. Very good, children. Now, this is an exercise which you should do in your English notebook. You have to list down the good habit. Just write down there, already there in your textbook. You can just write it down in your English notebook. Write lesson number, good habits, and then right here, we'll read it out. Don't spit. Say with me. Don't spit. Save water. Save water. Comb your hair. Comb your hair.
bath daily, bath daily, eat healthy food, eat healthy food, play outdoor games, play outdoor games, eat green leafy vegetables, eat green leafy vegetables, save trees, save trees, brush your teeth, brush your teeth, help your friends, help your friends. Once more, quickly we'll recap. Don't spit, save water, comb your hair, bath daily, eat healthy food, play outdoor games, eat green leafy vegetables, save trees, brush your teeth, help your friends. Okay, so don't forget to write it down in your English notebooks. And that's all for today. See you soon. Bye.